Guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. Inshallah, I am a homebody from past 2-3 days and I've not vlogged, I've not done anything. So today I wanted to share you a little thing. So my dad ordered these from JioMart for just 79 rupees, and the price of this is around 298, I suppose. So this is how these are how the mugs are. These are coffee mugs and we've opened one to see the quality, and it's a very decent quality. You got it for 79 rupees, which is not a bad deal at all. So I just wanted to share it with you guys. So in case you have guests coming in and you want extra mugs and cups, this is definitely going to help. This is way better than getting plastic. I mean, this is at 209 and you get it for 79 rupees. Also, if you are looking for cute gifting options this festive season, then this also can help you. I guess if you're on a tight budget, this will definitely help you. And it came in this bag. There wasn't any protection or anything, but nothing did break out, so you know that worked in our favor. Later that same evening. लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि प्रोसेशन होगा दशहरा के टाइम पे, तो यही वो एलिफेंट है, वो जो थ्रोन है वो फेक वाला Several है. days later. हेलो, मम्मी पीस साइन उल्टा. Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. How are you all doing? I hope all of you are doing well, inshallah. And today we are having a barbecue party on our terrace, so you all are invited. Before you come, we have to do preparation, so that is what we're doing. We are doing lamb barbecue and we will also do some paneer. I am showing that to you guys, so join us in the preparations as well. ये है रान, इसको कहते हैं लाल लेग. लाम लेग, इसकी रेसिपी ये है. फर्स्ट मैंने थोड़ा सा कट लगाया, धोया, उसके बाद हल्दी पाउडर डाला, फिर लाल मिर्च डाला, फिर ज़ीरा मेथी पाउडर मम्मी ऑलरेडी बना के रखती हैं. नमक थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मिर्च पाउडर, खटाई के लिए नींबू डालेंगे, नींबू का रस अच्छे से. जब इसको बारबेक्यू करेंगे तो न खाते बने न छोड़ते बने. मम्मी ने मैरिनेट कर लिया है लैम्ब का लेग, एंड अभी मेरे लिए पनीर का बना रही हूँ मैं बारबेक्यू स्क्यूअर्स. तो उसके लिए मैंने तंदूरी चिकन मसाला डाल लिया है एंड ऑनियन पाउडर डाल दिया है. इसमें मैं अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, एंड और तो मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, रेगुलर सॉल्ट भी डालूंगी. ऑनियन पाउडर ऑलरेडी मैंने डाल लिया है, तंदूरी मसाला आपने देखा मैंने डाल दिया है. मैंने यहाँ पे 1 kg पनीर लिया है एंड सम कैप्सिकम काट लिए हैं और थोड़े ऑनियंस भी काट लूँगी, और इसके अलावा मैं थोड़ा आमचूर पाउडर भी डालूंगी. सो दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू पुट, एंड देन आई विल ऑब्वियसली ऐड 1 tablespoon ऑफ ऑयल in it so that it gets marinated well. That is all I am going to be putting in my paneer barbecue skewers. फ्रीज़र में रख दूँगी 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी. Also for the barbecue we have cornito nacho crisps in the flavor peri peri, sour and cream and onions,
So we have that. We've got the dips as well. We've got the cheesy dip and we've got the salsa as well. So that we will be having. Okay, you guys, मैंने दही ऐड करके मसाला बना लिया है. So basically I put the same things that I told you guys that I'll put. So I've made the barbecue and then now I made the sauce. Now I will add the paneer. So let me chop the big paneer and then come back to you guys. Breathe you. Like with the fine. बंद करा लूँ ये. 31 years old, still I need my mommy's help. बड़े बड़े बनते हैं. ये इसमें मैं नहीं मम्मी इसका हाफ हको इतने कट करते हैं सो. सो गाइस हो गया है मेरा पनीर बारबेक्यू का मसाला जो भी है. एंड अभी मैं इसको फ्रिज में मैरिनेट करने रख दूंगी 1-2 घंटे बिफोर वी रिमूव इट फॉर लाइक विल डू इट इन द नाइट प्रॉब्ली. सो या तब तक मैं रख दूंगी ढक के. एंड प्याज मैंने डाल दी है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट लुक्स रियली टेम्पटिंग. मन कर रहा है अभी मैं बना के खा जाऊँ. वर्ड्स हैं ये पनीर के लिए हैं. अभी मैंने इसको वॉश कर दिया है. एक्चुअली डोंट नीड टू वॉश देम बट ये बहुत टाइम से डस्ट कलेक्ट कर रहे थे तो आई हैड टू वॉश देम. ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा निकला है. सो आई वॉश देम. नाउ आई एम गोइंग टू ड्राई देम फॉर सम टाइम. एंड फिर इसको मैं थोड़ा सा ऑयल करूँगी ताकि ये पनीर इसके ऊपर स्टिक ना करे या फिर इवन ऑनियन ईजिली कैन कम आउट. सो दिस इज द स्क्यूअर्स. पुचका हो गया. सो गैस मैंने डाल दिया है स्क्यूअर्स में पनीर को. हमने अराउंड 2.5 to 3 hours, मोर देन 3 hours हमने मैरिनेट कर लिया है. तो अभी चलते हैं बारबेक्यू करने के लिए. हमारे मटन रान भी रेडी है. मटन तो हमारे बारबेक्यू को थोड़ा सा क्लेंस करेंगे. उसके बाद हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर पानी भर रहा है. एंड बाय द वे अब जो लोग नहीं देखें दिस इज अवर टेरेस एंड दिस इज हाउ इट्स लाइक. दिस वन रूम विद स्टोरेज स्टफ. I don't know if you guys can see me. Let me just come on the light. And yes, तो हम लोग अभी फाइनली बारबेक्यू करेंगे. अभी हो रहे हैं अराउंड 8:30 ish. सो बाय 9:15 एट द मोस्ट चूल्हा जल जाना चाहिए. सो डोंट माइंड मी लुकिंग लाइक दिस बट yes, let's start it. Guys, I know I look like a Manjalika right now but yeah, I wanted to show you our बचपन का table like where we used to study. I'll show you that, okay? Because वहीं पे हम स्कूल पढ़ते थे एंड ट्यूशन्स पढ़ते थे. वो टेबल अभी भी मम्मी ने रखा है. It's just passed down from my dad to us and like that. So I will show you guys the what is it called as the table and it holds a lot of memory. अभी भी जब भी देखती हूँ ना तो I feel like oh we used to study here, we used to have our tuitions or home tuitions. So yeah, मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ. गाइस तो ये रहा वो टेबल. आई डोंट नो पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा. आई होप यू गाइस कैन सी. और उसके साथ छोटी छोटी चेयर्स हैं. एक्चुअली 4 चेयर्स हैं. ये आई थिंक शीशम वुड या टीक वुड से बना हुआ है. आई एम नॉट श्योर. बारबेक्यू का सेटअप कर लिया है हम लोगों ने. लाइक धो के रख लिया है. अभी उसको ड्राई कर रहे हैं थोड़ी 5-10 मिनट्स में. एंड अभी कोल्स भी लेके आएंगे. कोल्स उधर हैं, उधर साइड में है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे. और हमारी रान ऊपर आ चुकी है. एंड नाउ वी हैव टू डू विद जस्ट वेटिंग फॉर मॉम एंड देन वी विल डू इट बिकॉज शी इज़ द बेस्ट एट इट एंड वी बोथ आर स्कैरी कैट्स. सो या मैं फ्लैश ऑन कर रही हूँ. तो हमने दिखाया था ना मैंने पहले थोड़ी देर पहले हम लोग नाचो क्रिस्प ले आए थे. तो एक तो हम पेरी पेरी ले आए थे, एक तो सावर क्रीम एंड अनियन लाए थे. दिस मी एंड माई ब्रदर ओनली विल इट. आई एम श्योर माई डैड एंड माई मॉम माइट नॉट इट
And then we got this salsa dip from the same brand Cornitos. So this is how it looks like. So हम लोग ये एक ले आए थे. And then we also got this cheesy dip, jalapeno cheesy dip. So this is how it looks like. और हम लोग इसको एक बाउल में डाल के ये डिप्स के साथ खाएंगे. What is it? Kulsa. Keep it down. Oh, Raan ki full edge workout. That's my brother. He's become roadie Anna these days.